होने के सब ठीक है। Yeah, sir, sure. So, hey guys, welcome back to our channel HackSudo. So, आज का गेस्ट लेक्चर बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के गेस्ट लेक्चर में हम हमारे नितिन पांडे सर जो हमारे नितिन पांडे सर गेस्ट लेक्चर लेने वाले हैं। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन छोड़ के उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में कौन से सक्सेस हासिल किए उनके बारे में आपको बताता। ओके, नितिन पांडे सर इज ए कम्युनिटी लीडर इन डिपकॉन लखनऊ, as well as he is a chair member of National Cyber Security Safety and Security Standards. Okay, he is also founder of National Information Security Council, and he is a founder of also Hackers Day. Okay, Hackers Day के बारे में सर लास्ट में कुछ information spread करेंगे. Okay, also he is now currently working in a CEO of Cyber System Info Solutions Private Limited. ओके, सो आज का लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी, करियर इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं लेते, हम डायरेक्टली सर की तरफ बढ़ते हैं। सर, नितिन पांडे सर। Yeah, thank you so much for inviting me thanks to whole team of HackSudo. So this is Nitin Pandey. I am going to talk about cybersecurity, and as he's already introduced me, so I don't think I should introduce myself. So talking about cyberspace, so first of all, let me clear that I will be speaking in both languages, I mean Hindi and English. So talking about cyberspace, it's a very vast, very huge domain. You can say it's like an ocean. तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब भी मैं भी बहुत सारे मैसेजेस I think every day I receive messages like I want to start my career, I want to make my career in cybersecurity domain. So basically students who are who are just pursuing their bachelor degrees or they are in 10th or 12th standard. So they are confused that from how and from where they can start their career, in cybersecurity domain. So that's a very obvious question. And because the cybersecurity domain is a huge, as I told you earlier, it's a very huge and very vast domain. So कहीं से भी आप मतलब जंप नहीं लगा सकते इसमें। बहुत लोग ट्राई करते हैं कि एक बार में सब कुछ सीख ले, तो वो काम नहीं करता है। तो उस स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ता है। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, in cybersecurity. If we talk about there are so many fields. If we talk about like web application security or VAPT, means vulnerability assessment and penetration testing, digital forensics, there's a huge scope in digital forensics because बहुत कम लोग हैं इस डोमेन में आज अभी इस वक्त, तो हमारे इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, मैलवेयर एनालिसिस, cryptography, social engineering, IoT security, mobile security, blockchain, exploitation, artificial intelligence. अभी रेड टीम, वो टाइम गया, वो जनरेशन गई जो जब हम कहा करते थे white hat, black hat, and all these things. So अभी क्या है कि जो एडवांस्ड लेवल सिक्योरिटीज हैं उसमें रेड हैट टीम आता है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और पर्पल टीमिंग, ये चीजें आती हैं। So talking about web application, because I think almost more than 70% whenever I communicate with any student or anybody, they always ask about bug bounty, because they are they see people posting their bounties and all. तो ये बहुत तेजी से उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो सोचते हैं कि हम बग बाउंटी में कैसे अपना करियर बनाए, या वो बिना सोचे समझे वो बग हंटिंग में कूद जाते हैं, जिससे कि उनको मिलता कुछ नहीं है और बाद में वो परेशान होकर फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। So talking about web application security, so as the name tells everything, web application security means it is a branch of information security
that only deals with security of website, or we can say web applications or web services. Like for example, we are right now we are using Zoom app, so we can consider it in web application security. So I personally believe that the best way to learn web application security is OWASP Foundation. You can, because everything is open source there, you can learn everything if we talk about web application security from OWASP.org. So, and also let me tell you these are some methodologies. Like you can see OWASP, OWSTMM, it means open source security testing methodology manual. So there are so many methodology. I personally follow OWASP guidelines because I what I have seen that OWASP is it's a perfect way to learn web application security. So I always believe that we should follow OWASP guidelines. So as you can see, OWASP दे हर 4 साल में ये अपना टॉप 10 बग्स निकालते हैं, जैसे 2013 और 2017 की आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स। तो टॉप 10 में कौन कौन से बग्स आते हैं, vulnerabilities, I mean most common bugs. So as you can see, the first one is injection, second one broken authentication and session management, third one is cross-site scripting. Cross-site scripting बहुत ही common bug है, और ज़्यादातर लोग जब बग बाउंटी भी करते हैं तो वो एक्सेस ही फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन आ गया, CSRF आ गया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग. So if you talk about cross-site scripting, so there are two types of accesses. One is reflected and one is stored. So I'm not going into the मैं डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि 1 घंटे में पूरा सेशन खत्म करना है, हमको कंप्लीट करना है, तो मैं एक ऐसे ऊपर से एक ओवरव्यू देता जाता हूँ चीजों का. So you can start, you can start practicing in DBWA or WebGoat. There are so many, where you can say them. Vulnerable labs are available. You can download them and you can install these vulnerable labs in your system, and you can practice whatever you learn. Just always try to practice. If you talk about DVWA, damn vulnerable web application, so it's free and open source, and PHP MySQL web application that is damn vulnerable. Here you will, I think you will see the most common bugs. You can practice all of them here. So these are some steps which you need to follow if you want to pursue your career in web application security. Like, start reading. First of all, you have to understand the worst top 10 bugs, which bugs are most common in web application security. Like I have mentioned, SQL injection or cross-site scripting or CSRF. So after that, you can also download OWASP testing guide manual. So once you will download and start learning OWASP testing guide, so you will start understanding how to find a bug. Always try to understand the concept behind a bug. तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कैसे किसी बग को ट्रिगर करना है, कैसे किसी बग को खोजना है. Because there is huge competition if we talk about bug bounty. So it's not easy nowadays to get a bug in any website, or because ये 10 सालों से बग बाउंटी सर्विसेज दे रहे हैं ये लोगों को, और हर रोज लाखों लोग इस पे हंटिंग करते रहते हैं, और वो जो भी उनको बग मिलते हैं रिपोर्ट करते रहते हैं. So it's not easy to get a bug. Maybe you find a bug and आपको पता चला वो डुप्लीकेट है, तो उससे कभी डिसअपॉइंटेड मत होइए, सीखिए और भी ज्यादा क्या आप सीख सकते हैं. और उसके बाद this is the most important part. If you are you want to pursue your career in web application security, most of the people, they don't want to learn web programming languages.
So it is, very important to at least to know the basics of HTML, CSS, PHP, JavaScript, so that at least you can understand the source code. तो जैसे कि अगर मुझको फॉर एग्जांपल मुझको कोई मुझे चाइनीज या रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है उसको अगर मुझको पढ़ना है तो मुझे जाहिर सी बात है रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तभी मैं उसको पढ़ पाऊंगा नहीं तो मेरे लिए तो वो कुछ वो क्या लिखा है मैं नहीं समझ सकता कभी भी उसी तरह से जब तक आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे सोर्स कोड को आप नहीं पढ़ पाओगे कि सोर्स कोड में क्या लिखा है क्या कोडिंग है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वेब programming languages and as I told you practice whatever you learn like if you have learned SQLi injection start try to practice in like BWA or web code or there are so many online labs are available like try hack me it's perfect it's an amazing online lab to do all this. Also try to read technical write-ups. Almost, I think so many researchers when it comes to bug bounty, they वो अपने blogs पे लिखते रहते हैं POCs means proof of concepts वगैरह वो उस पे अपने डालते रहते हैं उसको हमेशा आप देखिए उसको समझने की कोशिश करिए उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं join some bug bounty communities like such as like HackerOne हो गई bug crowd हो गया Signac हो गया so join these communities interact with other bug bounty hunters you will learn a lot from them and join online pen testing labs like try hack me so here you can you can penetrate bugs online and then start hunting for bugs and reporting them and I would suggest that if you want to become a bug bounty or bug hunter so start from the websites which are not very famous like don't start directly from finding bugs in Microsoft or Google start from जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है वेबसाइट्स उनसे स्टार्ट करिए और रिपोर्ट करिए बहुत ज्यादा उसमें आप मत पड़िए कि उसको इतने डॉलर्स मिले तो हमेशा पैसे के पीछे भागने ये चीज नहीं होती है पहले जितना से ज्यादा हो सके आप सीखिए चीजों को उसके बाद once you learn then obviously you will start and also try to participate in CTF challenges I think in India uh, every month one CTF challenge happens so try to participate in CTF challenges you will learn a lot so these are some bug bounty platforms from where you can join them and you will learn a lot from after joining these platforms like Bugcrowd, Signac, and HackerOne, so on. So now talking about BAPT because if we ask anyone that what do you want to become, either they will say they want to become a bug bounty expert or they want to become a penetration tester. So first of all, you need to understand that BAPT is BAPT is a step-by-step process. VA means vulnerability assessment, and penetration testing is the PT. So there is a difference between VA and PT. ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं वीए में क्या होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है इसमें हम स्कैन करते हैं सिस्टम्स को फॉर एग्जांपल हमें कोई सिस्टम दिया गया कि आप इसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो तो हम उस सिस्टम या उस सॉफ्टवेयर या उस नेटवर्क में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं जो भी लूप होल्स हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी रिपोर्ट देम that we found these loopholes, these vulnerabilities in your network or in your system. And in penetration testing, we perform, the real, we launch the real world attack, but in a secured manner.
हम जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक अटैकर जैसे अटैक करता है किसी सिस्टम पे, हम उसी टाइप से अटैक करके हम उन बग्स को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सिक्योर मैनर में, ताकि उसको कहीं से डैमेज ना हो सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डैमेज ना कर सकें। तो इस वे में हम उसको पेनिट्रेट करते हैं, we penetrate the system and we try to trigger the vulnerabilities. So these are some steps of VAPT. We can You can say the process of VAPT, like footprinting and information gathering. It is also known as recon. So as you can see, who is lookup, extracting information from DNS, email servers, social engineering. These all, like, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जिस जिस सिस्टम या जिस सर्वर या कुछ भी आप बोल लो, जिस नेटवर्क पे हम वीएपीटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम कितना ज्यादा से ज्यादा, हाँ ऊपर, हाँ अरे मैं लाइव हूँ अभी, ऊपर ऊपर, सॉरी। सो ऊपर ऊपर ये सीढ़ी से जाइए, sorry guys. Then comes the scanning part, where we scan the ports which are open, and pings, vulnerability scanning. It comes. Then comes the exploitation part, where we once we come to know about the vulnerability, we exploit it, like using meta exploit or something like that, password cracking or anything. Then maintaining access. So these are some parts of, like you can see here, footprinting and information gathering. So this is phase one, as you can see here, when you are doing, footprinting and information gathering. So, like you are Googling, for example, Microsoft. So you will see the result of Microsoft, and you can, this is locating internal, yeah, locating internal URLs. So it is very important to know all the internal URLs exist. uh, yeah Sorry, Google Doc helps a lot, understand how to use Google Doc list, how to how to you just Google and you will get everything there. So who is lookup, you can get so many information of your target. And after as you can see here, registrant and all the name servers and everything you can get from who is lookup. Website mirroring, ST track is very informative. It is a very good you can say tool. From by using this tool, you can copy the whole website, which will help you a lot. Second part comes scanning. Scanning comes after that. So there are three types of scanning, as I told you: port scanning, vulnerability scanning, and network scanning. So you need to understand these things and all, and after that, exploitation and gaining access comes, where we use tools like Metasploit and all to exploit the system and to gain the access of the targeted system or network, or you call it anything. Then it comes yeah, covering tracks, removing your all the evidences and log files, everything. So these are the goals of VAPT, vulnerability assessment and penetration testing. And I mean, uh, so these are some steps for beginners who are
new in VAPT and they want to pursue their career as a penetration tester. So first of all, you have to learn, some very important programming languages like C, Java, C++, Python. So if you know these languages, it becomes maybe if you are very skilled in programming languages, maybe one day you start making your own exploits. Uh, also know some Linux commands. It is very important to know I'm getting interrupted. Sorry. So yeah, no Linux commands. So if if you will start using any Linux-based, hello, will you Yes, हाँ sir. हाँ कनेक्टेड है connected है? सॉरी, कुछ लोग आ रहे हैं तो बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं. कोई बात नहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था डिस्कनेक्ट हुआ था अभी कनेक्टेड. अच्छा अच्छा. So yeah. So you need to learn at least if you are good in programming like C or C++, Java, Python. So maybe you can make your own exploit. You can start writing your own exploits and all. And you need to know Linux commands. Because without knowing the Linux commands, you won't be able to use any Linux-based distributions like Ubuntu. Start from basic Linux-based distributions like Ubuntu, and then switch to Kali Linux. Don't directly start, trying. If you don't know, I am talking about the beginners, जो नए हैं. डायरेक्टली आप ये कोशिश मत करिए कि हम सीधा लाइनक्स काली लाइनक्स स्टार्ट कर देते हैं और टेस्ट बेड उसमें ओपन करके हम विंडोज एक्सपी फॉर एग्जांपल, हमारा टारगेट भी विंडोज एक्सपी है, तो हम कोई ट्यूटोरियल देख के उससे क्या होगा कि मे बी आप उस ट्यूटोरियल को देख के उसके कमांड्स को फॉलो करते हुए आप चीजों को करते जाएं, आपको लगे कि अरे वाह, मैंने तो उस टारगेटेड सिस्टम को मैंने वो कर दिया एक्सप्लॉइट. सो उससे आप कुछ ज्यादा सीख नहीं पाएंगे. सो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट एटलीस्ट लर्न द बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स एंड देन start using any Linux distribution like Ubuntu, and then switch to Kali Linux. Learn how to use inbuilt tools in Kali Linux. This is the main important part. If once you start using Kali Linux, तो आप Kali Linux यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें इनबिल्ट सारे ऑलमोस्ट सारे टूल्स पहले से आपको मिल जाएंगे. आपको कहीं से किसी भी टूल को बाहर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. Like if you are using Windows, so also it is very obvious that if we have to if we need a password cracking tool like can enable or jack the wrapper, so we need to join the wrapper, so we need to download it from the website. पर यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे सारी चीजें. उसको समझिए कि कौन सा टूल किस लिए है और उसको कैसे यूज करना है. हैव अ गुड स्किल्स इन मेटास्प्लॉइट. सो मेटास्प्लॉइट पे भी आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे स्किल्स अच्छे डेवलप करने पड़ेंगे. And always prefer manual testing, not automatic. I have seen so many people that उनको कभी टास्क दिया गया कि आप ये ड्यूटी कर दो, वो ऑटोमेटिक टूल ऑटोमेटिक्स वगैरह लगा के उन्होंने जो भी ऑटोमेटिक टूल्स लगा के जो भी रिपोर्ट आई उसको सबमिट कर दिया. सो आल्सो प्रेफर मैनुअल. Obviously it is very obvious that you should definitely use automatic tools like Agnetics, but use it for like web spidering or for info gathering. So but जब आप किसी बग की टेस्टिंग कर रहे हो तो आप मैनुअल टेस्टिंग को ट्राई करिए, बिकॉज मे बी
आपको अगर एक कोई फिल्टर लगा है, फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए वेबसाइट के जो उनकी टीम है, उनके डेवलपर्स हैं, उन्होंने कुछ फिल्टर्स लगा दिए हैं, से ब्लैक लिस्ट उन्होंने बना दी है, व्हाइट लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से टर्म्स को वो एक्सेप्ट करेंगे या कौन कौन किस कीवर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ब्लैक वर्ड लिस्ट बना दी है। So at that time you need to you need manual testing to encode your script and then try to figure it out. So talking about social engineering, it is a very famous art. It is also called art of human hacking. So and also preferred as brain hacking of a human brain. So as we know that we humans are the most vulnerable thing in this world. That's why that's why most of the hacks happen. अगर हम बात करें कि रिसेंटली ट्विटर का जो हैक हुआ था, जिसमें कि इतने बड़े बड़े लोगों को के अकाउंट्स हैक हुए, सोशल इंजीनियरिंग ही यूज की गई थी। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हैक किया गया था। उनकी इंटरनल टीम्स तक वो जाके और उन्होंने कैसे अकाउंट्स हाईजैक किए थे। So social engineering is the art of manipulating people to gain their confidential information. And phishing is the most common type of social engineering. Phishing बहुत common है, and still phishing is the most effective attack even today. It is most effective. I mean, daily maybe all of us are 75% or 50-50, at least 50% of us get phishing mails, phishing links. So phishing it's all because it always works, not always, then it's very effective when it comes to the attackers. अगर हम अटैकर की नजर से देखें तो वो अभी भी फिशिंग बहुत ही एक अच्छा वो है। अगर आपको फिशिंग तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप उसको आप सर्च कर सकते हो। These are some most common misconceptions are like people think that I have a next generation firewall, my content gateway is very good, our email protection will take care of phishing or malicious links, endpoint will make sure fish doesn't cause damage. So these are some misconceptions, और इसी वजह से फिशिंग हो जाता है और पता भी नहीं चलता कंपनीज को, बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ क्या हो गया। So the fact is, despite all protection, fish mails get through. It is true, and most people still cannot recognize sophisticated phishing emails. Like हम ये सही बात है, ऐसे ऐसे तरीकों से फिशिंग लिंक्स या मेल भेजे जाते हैं कि हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में हम क्लिक कर देते हैं। और एम्प्लॉइज में टेंडेंसी भी होती है कि बहुत अर्जेंटली वो क्लिक कर देते हैं लिंक्स को। सो as you can see here, 83% of organizations said they have experienced phishing attack last year. Phishing was the third most common type of spam reported to the FBI. 97% of people cannot identify a phishing scam. So it's a very shocking fact कि 97% लोग फिशिंग स्कैम को नहीं, फिशिंग लिंक आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये आसानी से ईमेल गेटवे सबको बाईपास भी कर जाते हैं, स्पैम फोल्डर्स में ना जाके बहुत बार स्पैम डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स में भी आ जाती हैं। So these are some statistics of 2018. So it looks like that talking about spamming or spoofing. So spamming is when one person or company sends an unwanted email to another person. So take
इधर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर है फॉर फेक ईमेल्स भेजने के लिए। सो यहाँ से आप एक फेक ईमेल जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अपना करके एक डेमो दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है ओवास फाउंडेशन की तरफ से। मैनेजर एज यू कैन सी हियर फ्रॉम ओवास फाउंडेशन, email ID is manager@ovas.org to Nitin Pandey my email ID protonmail.com, and here is the content. So you can see here it directly comes in my inbox. It bypassed the spam folder and it directly came in my inbox folder. And as you can see, there is a link. So maybe it could be a phishing link or anything. So it was like that. Talking about password attacks, so we all know what is password. So password, the concept of password cracking is guessing or recovering पासवर्ड। मेरे साथ बहुत बार होता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फेसबुक में मेरा हैक करने की कोशिश करता है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ क्योंकि पता नहीं उनको क्या मिलता है, ये बार बार रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, मुझे मैसेज आता है मेरे फोन पे। always use two-way authentication, always enable this feature whether you're using Facebook or Twitter or Instagram, whatever it is, always enable two-way authentication so that at least nobody can guess your password or they can directly hack। अगर वो आपका पासवर्ड जान भी जाते हैं तब भी वो हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही उसको एंटर करेंगे आपके पास कोड आ जाएगा। So these are some types of password attacks. The dictionary attack is the most common type of password attacks, जिसमें एक बहुत बड़ी डिक्शनरी रहती है पूरा वर्ड की और पूरा पासवर्ड की कॉम्बिनेशंस की। तो उस डिक्शनरी से वो बार बार एक टूल या किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए हम करते हैं कि हम पासवर्ड को जान सकें। हो सकता है वो कोई कॉमन पासवर्ड हो, बहुत लोग यूज करते हैं आज भी। जैसे उन्होंने अपना पासवर्ड QWERTY123 रख दिया, या बहुत लोग अपना 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड रख देंगे। तो ये आसानी से डिक्शनरी अटैक में ये पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। ब्रूट फोर्सिंग आ गया। ब्रूट फोर्सिंग में जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कंबाइन करता है, ये नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स सबको कॉम्बाइन करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकेंगे ये उतने ट्राई करने की कोशिश करेगा। और अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो वो हो जाएगा। की लॉगर्स समटाइम्स भी अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलता, हमारे सिस्टम में की लॉगर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, स्पाईवेयर्स हो जाते हैं। फिशिंग, अभी मैंने आपको बताया, फिशिंग इज वेरी गुड वे टू गेट समवन्स यूजरनेम एंड पासवर्ड। एंड पासवर्ड गेसिंग, ऑफ कोर्स बहुत लोगों का पासवर्ड क्या रहता है कि मैंने खुद देखा है कि वो अपना मोबाइल नंबर रख देंगे अपना पासवर्ड, या अपना डेट ऑफ बर्थ रख देंगे। कुछ लोग तो अपना नाम ही पासवर्ड में रख देते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है इनका पासवर्ड गेस करना। तो एंड देन रेनबो टेबल अटैक। So as you can see here, guessing techniques. So it's like as I told you, date of birth, mobile number, favorite celebrity's name. So if I know you personally, I can easily guess that. I obviously I know your mobile number, I know your date of birth. Maybe I know what you like, क्या खाना आपको पसंद है, कौन आपका favorite celebrity है, या कुछ भी, anything. So almost 65% passwords around the globe are easy to guess because they are very simple and common passwords. So इसलिए डिक्शनरी अटैक्स बहुत ही इसमें काम कर जाती हैं अक्सर और आसानी से हैक हो जाते हैं। So talking about phishing technique, you can see here phishing technique में जब होता है, आप एक बार सोर्स कोड पे अगर नजर डालेंगे तो आप मेथड को देख रहे हैं, मेथड गेट है। सो इट इज टेकिंग, यू कैन हियर सी action equals login.php method equals get.
So it is taking, whatever we are typing, मतलब जो भी हम इंटर कर रहे हैं उसको ये हमसे उस फॉर्म में जो भी हम अपना इनपुट दे रहे हैं ये उसको ले रहा है, और वो सर्वर पे कहीं पे होस्टेड है एक फिशिंग साइट, जैसे ही अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं वो उस अटैकर के सर्वर पे चला जाता है और वो भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसा हमने टाइप किया सेम वैसा का वैसा। डिक्शनरी अटैक मैंने आपको बताया, ब्रूट फोर्सिंग हो गया जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के ट्राई किया जाता है। रेनबो टेबल अटैक हो गया। टॉकिंग अबाउट malware, so malware means malicious software. So malware is a program or file that is harmful to a computer system or user. It includes viruses, worms, trojan horses, spywares, ransomwares. आजकल तो बहुत सारे चले हैं ransomwares. डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, करियर में अगर हम बात करें तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डिजिटल फॉरेंसिक में बहुत ही बहुत ज्यादा स्कोप है, लार्ज स्कोप है, क्योंकि अभी डिजिटल फॉरेंसिक में लोग कम है और कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसमें डिजिटल फॉरेंसिक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मर्डर भी हो जाता है जो कि अगर वो एक साइबर क्राइम नहीं भी एक मर्डर हो जाता है तब भी वहां पे एक फॉरेंसिक टीम की जरूरत पड़ती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनकी डेथ या उनका सुसाइड मर्डर जो भी है, उसमें देखा होगा कैसे सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सारे डिलीटेड चैट्स और सारी चीजों को कैसे रिट्रीव किया, तो एक उनकी फॉरेंसिक टीम थी जिसने ये चीजें की। So these are some steps which you need to follow, not just digital forensic, but I personally believe that in every particular domain of cybersecurity, either we talk about web application, BAPT, exploit writing, or anything, we need to follow these steps. Like first of all, complete your education, get a degree, आप पढ़ाई करिए, उसके बाद नितिन सर, डेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो नितिन सर, सॉरी सर अभी ये मीटिंग क्या? एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होगी Zoom की, वापस से आप ज्वाइन करो। Zoom की मीटिंग एंड होगी, वापस से हाँ, ये Zoom की मीटिंग का टाइमिंग है ना 40 मिनट्स के बाद वो बंद होती है। मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ओके, एक सेकेंड दो बस, एक सेकेंड।